From the historic meet of Prime Minister Narendra Modi with Chinese President Xi Jinping to Priyanka Gandhi Vadra making her electoral debut, and how is Odisha bracing for Cyclone Dana and will Kolkata be affected? Let's get you all the big stories of the day in this news wrap. Hi, I'm Charulata Biswas and you're watching the Indian Express. Let's get you started. Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping held their first bilateral meeting in 5 years on Wednesday, in which they underlined that a stable bilateral relationship between New Delhi and Beijing will have a positive impact on global peace and prosperity. Listen in. Excellency, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत For both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries, and to contribute to promoting multipolarization and democracy in international relations. The two leaders met on the sidelines of the BRICS summit in the southwestern Russian city of Kazan. The meeting comes 2 days after India and China agreed to restore patrolling rights to each in the Depsang Plains and Demchok region, thereby making a significant headway in efforts to resolve the military standoff along the line of actual control in eastern Ladakh. Accordingly, they instructed the special representatives to meet at an early date and to continue their efforts in this regard. You may recall that Special Representative of India, Mr. Ajit Doval, who is also the National Security Advisor, and the Special Representative of the People's Republic of China, Foreign Minister Wang Yi, also a member of the Politburo, have met on the sidelines of international events, but they have not had a round of talks in the special representatives format since December 2019. So following today's meeting, we hope to schedule the next round of the SR's talks at an appropriate date. The two leaders also reviewed the state of bilateral relations from a strategic and long-term perspective. They were of the view that stable bilateral relations between India and China, the two largest nations on earth, will have a positive impact on regional and global peace and prosperity. And both of them stressed that with maturity and wisdom, and by showing mutual respect for each other's sensitivities, interests, concerns, and aspirations, the two countries can have a peaceful, stable and beneficial bilateral relationship. As we have maintained during the last 4 years, the restoration of peace and tranquility in the border areas will create space for returning us towards the path of normalization of our bilateral relations. Officials will now take the next steps to discuss enhancing strategic communication and stabilizing bilateral relations by utilizing the relevant official bilateral dialogue mechanisms, including at the level of our respective foreign ministers. The two leaders also briefly reviewed regional and international developments of mutual concern and interest. They agreed to maintain close communication in this regard. Naturally, they also had a very productive exchange on BRICS and the potential for India and China to enhance cooperation on this particular platform. And in closing, Prime Minister Modi also assured India's full support
to China's SCO presidency next year. A day after a multi-storied under-construction building collapsed in Bengaluru's Babu Saplaya during heavy rain, leading to 5 deaths, the Hennur police on Wednesday arrested its owner's son and took into custody a contractor. The arrested have been identified as Bhuvan Reddy, son of Muniraja Reddy, under whose name the building was being constructed. The police named Muniraja Reddy, one Mohan Reddy and one Elumalai, among others, in the FIR. The case was registered after Mohammad Arshad, a labourer, filed a complaint with the police. The 6-story under-construction building collapsed in Babu Saplaya near Hennur in North Bengaluru around 4 p.m. on Tuesday when workers were inside the building. The authorities reported that the construction work was of poor quality and that the owner did not have permission to build 6 floors. Moving on to the southern state of Kerala, where Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra filed a nomination from Wayanad, a seat vacated by her brother Rahul Gandhi. She was accompanied by her brother and leader of opposition Rahul Gandhi, mother Sonia Gandhi and husband Robert Vadra along with her son. She will be making her electoral debut on November 20th. When I was 17 years old, I campaigned for the first time for my father in the 1989 general election. ഞാൻ 17 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നടത്തിയത്, അന്നത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many of my colleagues. That it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. Cyclone Dana has already formed over East Central Bay of Bengal and is expected to make landfall as a severe cyclonic storm between Bhitarkanika and Dhamra areas of Odisha, with a predicted wind speed of 100 to 120 km per hour on the night of October 24th. Here's a report. The Odisha and West Bengal governments have begun evacuating people and decided to close educational institutions in vulnerable areas as Cyclone Dana is set to cross the coasts in the early hours of 25th of October with a wind speed of 100 to 110 kilometers per hour, gusting to 120 kilometers per hour. हमारा impending cyclone Dana के लिए हमारा full fledged preparation है. हमने सारा फील्ड टीम्स एवं सारा लाइन डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी अलर्ट कर चुके हैं एवं सारा साइक्लोन शेल्टर्स हमारा जो है टेम्पररी साइक्लोन शेल्टर्स एवं परमानेंट साइक्लोन शेल्टर्स सारे जगह पे बेसिक फैसिलिटीज इंक्लूडिंग टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल द मशीनरी सफिशिएंट क्वांटिटीज में है कि नहीं एवं फंक्शनल कंडीशन में है कि नहीं, इसका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है. प्लस हमारा सारा इवैक्यूएशन प्लान जो भी हमारा वल्नरेबल लोग हैं या फिर जैसे प्रेग्नेंट वुमेन विद 2 वीक्स ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इन सब लोगों को प्रेग्नेंट वुमेन विद 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी हम लोग नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में हम इनको शिफ्ट करेंगे एवं जो वल्नरेबल लोग हैं उनको हम साइक्लोन शेल्टर्स में मूव करने के लिए प्लान रेडी हो चुका है हमारा. इसके साथ साथ हम साइक्लोन के बाद इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए कैसे हम रोड्स एवं इलेक्ट्रिकल लाइंस जल्दी से जल्दी हम रिस्टोर करें एवं फंक्शनल करें, इसके लिए भी हमारा फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन है. उसके साथ साथ साइक्लोन के बाद अगर हमारा फ्लैश फ्लड्स कहीं पे हो जाता है ओइंग टू वेरी हेवी रेनफॉल, उसके लिए भी हमारा प्रिपेयर्डनेस है. हमारे पास अभी जिला में एक ओड्राफ टीम है. उसके साथ साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट 3 to 4 मोर ओड्राफ टीम्स एसआरसी के साइड से हमारा जिला में आएंगे. उनको खास करके हमारा जो लो लाइंग ब्लॉक्स है उन सब ब्लॉक्स में हम ब्लॉक पॉइंट में उनको दे देंगे सो दैट कोई भी सिचुएशन हो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे एंड रिलीफ ऑपरेशन कैरी आउट कर पाएंगे. हमारा जिले में 26 साइक्लोन शेल्टर्स है, बट उसके साथ साथ हमारा सफिशिएंट नंबर ऑफ टेम्पररी शेल्टर्स भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं. जो नियरेस्ट स्कूल्स है, सुटेबली लोकेटेड स्कूल्स है, उसको भी हम खोल के उसमें भी सारे प्रिपरेशन करके हम रेडी रखेंगे. साइक्लोन के बाद का रेस्टोरेशन वर्क्स में सबसे हमारा प्रायोरिटी है इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोरेशन. सबसे जल्दी कैसे इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो जाएगा उसके लिए हमारा टीपीएनओडीएल एवं टीपीसीओडीएल रेडी है एवं एनर्जी डिपार्टमेंट साइड से भी उनका डायरेक्ट सुपरविजन है. उसके साथ साथ रोड रेस्टोरेशन, जो ट्रीज गिर के रोड ये सब ब्लॉक करेंगे तो उसके लिए हमारा
फायर टीम्स और उसके साथ साथ रोड एजेंसीज जो है उनके पास सफिशिएंट ट्री कटर्स और 100 मशीन्स ये सब रेडीनेस में वो लोग है। तो दैट हमारा प्रायोरिटी रहेगा सबसे पहले मेन रोड्स को क्लियर करके रखने के लिए। उसके साथ हमारा जो रोड्स एंड ब्रिजेस जिसको अगर कुछ इमीडिएट रिपेयर करना होगा उसके लिए भी सारा मशीनरी जो अवेलेबल है, सारा जो डिपार्टमेंट्स के पास जो मशीनरी है वो भी लिस्ट आउट करके वो लोग प्रिपेयर्डनेस में है, जैसे कि हम जल्दी से जल्दी हमारा रिस्टोरेशन कर पाएंगे। बताना चाहता हूँ कि ककद्वीप सब डिवीजन एक कोस्टल सब डिवीजन है, तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जनरल पब्लिक, एवरीबॉडी, सभी लोग इस स्थिति से पहले भी परिचित है। तो पहले भी कुछ दिन पहले ही रेमाल हुआ था, अब दाना आ रहा है, तो हम लोगों का प्रिपरेशन ऑलरेडी कुछ परमानेंट नेचर का प्रिपरेशन रहता ही है। जैसे कि हम लोगों का एमपीसीएस होता है, फ्लड सेंटर होता है, हम लोगों का 64 एमपीसीएस है, फ्लड सेंटर 12 है। हम लोग स्कूल सिलेक्ट करके रखते हैं, हम लोग अगर जरूरत पड़े तो यूज करेंगे। 158 ऐसा एयर ड्रॉपिंग प्लेसेस हम लोग आइडेंटिफाई करके रखते हैं, जरूरत पड़ते यूज होंगे। ऐसे 41 है, रिलीफ गोडाउन है, हर वीडियो ऑफिस में रिलीफ गोडाउन है जहाँ पे पहले से ही रिलीफ का मटेरियल मौजूद किया जाता है। वल्नरेबल पॉइंट ऐसे हमारा मेन वल्नरेबल पॉइंट 65 है, उसके अंदर 17 पॉइंट और भी ज्यादा वल्नरेबल है, आइडेंटिफाई करके रखते हैं। अगर जरूरत है तो वेदर के कंडीशन समझ के हम लोग तब पब्लिक को शिफ्टिंग करते हैं। अब सिर्फ आइडेंटिफाई करके रखते हैं। इसके बावजूद तो जो पॉलीथीन सीट मतलब जो ट्रिपल वो भी सफिशिएंट वीडियो का गोडाउन में दिया हुआ है। जो जैसे कि ट्रांसशिपमेंट का बात आता है सागौर आइलैंड के लिए, इसलिए सागौर आइलैंड के ट्रांसशिपमेंट 22 या 22 या 23 के अंदर ही सागौर आइलैंड के जो मटेरियल जैसे कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का WBSEDCL का कुछ मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट हो जाएगा, हो रहा है, आज ही हो रहा है। कुछ PH का पानी जल का जो पाउच वगैरह वो ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, क्योंकि वो अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा तो उसका प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाता है बाद में। और ट्रांसशिपमेंट हम लोग अगर वेदर खराब हो जाए तो तब ट्रांसशिपमेंट भी नहीं कर सकते, पहले ही करना पड़ता है। ये सब कुछ है। इरिगेशन को अलर्ट किया गया है, सिविल डिफेंस को प्रॉपरली डिप्लॉयड किया गया है। NRDM का तीनों ब्लॉक के लिए 3 टीम आ रहा है, एक सागर के लिए, एक ककद्वीप के लिए और एक पाथर प्रतिमा के लिए। बाकी तो हमारा कंट्रोल रूम पहले से ही खुला हुआ है, हम कंटिन्यू करते हैं कंट्रोल रूम का 2 लैंडफोन नंबर है कंट्रोल रूम, वो नंबर आप संप्रोजित भी कर सकते हैं, लोग जानता भी है, हम लोग भी करते हैं। इसके बाद जो ICOC लोग हैं वो लोग तो माइकिंग कर दे रहा है थ्रू ADM मेरीन। हम लोग को जो फिशरमैन है उसको भी अलर्ट कर दिया गया। The system is expected to continue its northwestward movement and strengthen into a severe cyclonic storm over the northwest Bay of Bengal by the early morning of 24th of October. It is projected to make landfall along the coasts of North Odisha and West Bengal, specifically between Puri and Sagar Island, from the night of 24th of October to the morning of 25th of October. That's all for today, but leaving you with visuals of the new Vande Bharat sleeper, which will come with CCTVs, bio-toilets and will be equipped with avoidance collision system. The Vande Bharat sleeper is designed for overnight travels and can go 800 to 1,200 kilometers. The train will have a combination of all types of AC variants, first AC, 2-tier and 3-tier coaches.